अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आज हमने क्रिएट किया है बहुत ही सिंपल सी स्मोकी आई लुक like within 20 minutes honestly. So before we continue the video, make sure you guys subscribe to my channel, follow me on Instagram और बट जो है ये बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा so you don't miss my videos. So सबसे पहले हम लोगों ने स्किन केयर यूज़ करना है और इसके लिए ग्लो रेसिपी का फेशियल स्प्रे है। दिस इज़ रियली ग्रेट। मैं इसे अपने फेस पे अप्लाई करूँगी, हर तरफ स्प्रे करना है और इसे ड्राई होने से पहले जो है हमने हाइलुरोनिक एसिड यूज़ करना है। दिस इज़ द ऑर्डिनरी और 2 पम्प्स मैंने यूज़ किए थे बिकॉज फेस बड़ा है ना, मुंह बड़ा तो मुंह पे लगाने के साथ साथ हमने नेक पे भी लगाया क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यू नीड हाइड्रेशन बिफोर यू अप्लाई एनी मेकअप ऑन योर फेस। और इसके बाद हमने अप्लाई करना है मॉइस्चराइज़र विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर द हाइलुरोनिक एसिड, ताकि आपकी स्किन जो है वो हाइड्रेटेड और मॉइस्चराइज रहे। तो दिस इज़ बाय इनके मॉइस्चराइज़र। इट्स बेसिक, इट्स वेरी लाइक अफोर्डेबल और it's good because it's thick and you know just to keep my skin looks glowy and moisturized throughout the day. So उसके बाद हम लोगों ने अप्लाई करना है। मैंने आईब्रो जो है वो अब ऑफ द कैमरा बना लिया बिकॉज बहुत लंबी हो जानी थी वीडियो, सो आई हैड टू जस्ट डू थिंग्स लाइक क्विकली। तो हम लोगों ने मैक की जो है वो मैक का कंसीलर वो मैंने यूज़ किया है। थोड़ी सी अमाउंट जो है हम लोग अपने आईलिड पे लगाएंगे ताकि एक अच्छी सी बेस क्रिएट हो जाए और एक फ्लैट ब्रश से जो है मैंने इसको ठीक से ब्लेंड कर लेना है ताकि हर तरफ ये प्रॉपर कैनवस की तरह फैल जाए। और मुझे ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं करना था बिकॉज इट वाज स्मोकी आईज, सो आई डिडंट हैव टू डू लाइक अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, सो इट वाज सिंपल बट यू नो easy and a little bit glamorous. उसके बाद जो है मैंने अर्बन डिकर का स्मोकी आई पैलेट यूज़ किया था। मैंने ज़्यादा आई शेडोज़ यूज़ नहीं किए, मैंने सिंपल ब्लैक आई शेडो यूज़ किया था टू बी ऑनेस्ट विद यू। और वॉइस ओवर करने का मकसद ये बिकॉज मेरे पीछे बहुत ही कमोशन थी, भी बहुत शोर था, इसलिए मुझे करना पड़ा। तो खैर आई शेडो जो है मैंने बहुत सिंपल अपनी जो है आईलिड के ऊपर प्रॉपर वो अप्लाई किया, नथिंग फैंसी बिकॉज आई वाज रनिंग लेट, हर कोई रेडी था सिवाय मेरे। तो अब हम लोगों ने जो है वो नेक्स की ग्लिटर ग्लू यूज़ की है। It's very affordable. You can even buy it from Amazon if you can buy like any glitter glue from Amazon you know as well. So इसकी ब्लैक आई शेडो के ऊपर मैं ब्लैक ही जो है वो ग्लिटर यूज़ करूँगी और ये ग्लिटर है BH कॉस्मेटिक का। मेरे पास और भी कलर्स हैं। So after we apply the eyeshadow and the glitter, क्योंकि वो हर जगह फैल गया था फॉल आउट क्योंकि बहुत ज़्यादा होता है, तो मैंने भी मेकअप वाइप से जहाँ जहाँ पे था वहाँ से रिमूव करके दोबारा से मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया बिकॉज आई लाइक वांट टू सिक्योर माय आई एरिया। एंड अब मैं जो है लॉरा मर्सियर का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। So I'll be using my Morphe flat brush, like not flat, थोड़ा सा angled है। This is especially for the foundation, और foundation जो है मैं Fenty Beauty का यूज़ कर रही हूँ। So जो ट्रांसलूसेंट पाउडर है ये लॉरा मर्सियर का है। हम लोगों ने फ्लफ़ी ब्रश के साथ इसको अप्लाई किया है जहाँ जहाँ भी मुझे अपने फाउंडेशन को सेट करने की ज़रूरत थी बिकॉज स्किन थोड़ी सी फेस थोड़ा सा ऑयली लग रहा था, सो आई हैड टू सेट माय फाउंडेशन। So after setting the foundation, I'm applying with a very detailed like small brush, सेम जो स्मोकी आई का था शेड अर्बन डिके का पैलेट से, वो मैंने आंखों के नीचे भी लगा लिया जो हमारी लोअर वाटर लाइन है, फिर लास्ट लाइन जो भी करते हैं। And this is an angle brush by Morphe. It was the limited edition, very pretty glittery brush. और जो पैलेट में यूज़ कर रही हूँ ये फेस पैलेट है by Kat Von D.
अब ये मेरी महारत है, मतलब मैं उसी ब्रश से जो है अपनी कॉन्टोर नोज़ पे कॉन्टोर कर रही हूँ. बट दिस इज़ लाइक हाउ यू कैन टेल कि मेरे पास कितना कम टाइम था रेडी होने के लिए. So using the same brush, I'm using my bronzer. It's by Charlotte Tilbury. This is one of my favorite bronzers. It's really pretty. और यार डेफिनेटली आपको ये बता रही हूँ मेरे पास टाइम नहीं है और मैं I'm showing off my nails, you know. So blush I'm using is also by Charlotte Tilbury. It was a little darker, but मैंने थोड़ा सा light use किया था and I forgot to show you that shade. Sorry about that. So now it's time to apply highlighter. This is Becca and the shade is Opal, and I can just dive into this highlighter literally. और ये मैं अप्लाई करते हुए हर जगह लाइक कोई 100 टाइम मैं अप्लाई करती हूँ इसको जाने से पहले कहीं भी. आई वांट टू मेक श्योर लाइक आई शाइन. So after applying 1000 layers of my highlighter, now we are going to apply eyelashes, and these are by Morphe. Nothing really fancy. It was just to look my eyelashes a little fuller, because with black eyeshadow के ऊपर जो है फिर eyelashes ठीक से नज़र नहीं आती natural. So मैंने nude color का light से color का beige color का basically use किए है lip liner, और lipstick जो है ये Natasha Denona की है. Very pretty nude color. I love this one. Oh my god. So we are almost ready, and it's time to show you full face. And this is me after doing my makeup, and look that glow, shine everywhere. My room looks bright. So joking. Okay, so I'm here showing off my jewelry, my earrings, my necklace, and my black dress, which I love a lot. My mom sent it to me, and I hope you like the video. Thank you so much for watching, and do not forget to subscribe to my YouTube channel and my bangles and everything. Like, just comment me down below what do you think about this look, and I hope you like it, and see you soon. Thank you for watching. Allah Hafiz.